Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार. Welcome to vksquare. सो आज की जो वीडियो होने वाली है हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे एग्जांपल्स के अगर मैं दूँ आपको, जैसे हमने प्रीवियसली इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पढ़ा था विच इज़ माइनस कॉस टाइम ऑफ एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू दिस इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन 2. बट क्या होता है अगर हमारे पास इंटीग्रल एक्स इंटू साइन एक्स आ जाए तब हम क्या करेंगे, दो अलग अलग फंक्शंस हो जाएगी, या x इंटू ई टू डी पावर एक्स या ई टू डी पावर एक्स इंटू साइन टू एक्स. तो जब दो टाइप के जो फंक्शंस होते हैं ना, इन सब का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो इसको यूज़ करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड का इस्तेमाल करते हैं. दिस इज़ द सेकेंड मेथड ऑफ दिस इंटीग्रल चैप्टर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर 7 इन द एनसीईआरटी. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो द कन्वर्जेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखता हूँ. स्टेटमेंट इन द सेंस एक लाइन लिख देता हूँ दैट इफ़ यू एंड वी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स मीन्स देन, मतलब यू भी एक फंक्शन है एक्स का एंड वी इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स. सो आई कैन राइट इट बोथ एज दिस. तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है, मैंने एग्जांपल में कैसे बताया, दिस इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज़ सेम लाइक दिस. सो यहाँ पर दो हमारे पास फंक्शन है, दोनों एक्स से रिलेटेड, मतलब एक कांस्टेंट से, बिकॉज इसके पीछे तो डी एक्स लगेगा, इस एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों फंक्शन होने चाहिए. सो यहाँ पर यू एंड वी आर द टू फंक्शन ऑफ एक्स. देन अब इंटीग्रेशन u डॉट v इंटू डी एक्स कैन बी रिटन एज. नाउ देखो इंपॉर्टेंट ये है, u इंटीग्रल v डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ v dot dx, and this is in the whole bracket and this is integration. So देखो जैसे अभी आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हो, आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट अभी इसको थोड़ा क्रैक करते हैं, इसका ईजिएस्ट फॉर्म करते हैं. क्या चीज़ एक्चुअल में ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है. सो देखो फॉर्मूला कहना चाह रहा है दैट u इज़ अ फंक्शन ऑफ x and v इज़ द फंक्शन ऑफ x, जस्ट लाइक दिस x and this is I think let's say this is ex, okay, dot dx. Now comparing both the equations, we have here u is equal to x and v is equal to e to the power x. Both are the function of x, so we can write it as u means x, x integration of v means e to the power x dx minus integral whole bracket differentiation of u, what is the u, x, of dx, then integral of v dot dx which is ex dot dx bracket dot dx. Now we can solve this, that x is equal x into the integration of e to the power x is e to the power x. Okay, minus type for differentiation of x is 1 dot integration of ex would be integration of ex, and this is dx, this is all in bracket. So we can write it as x to the power x e to the power x minus integration of ex dot dx, so which gives us x e to the power x minus e to the power x. So this is the formula of the integral e to the power x dot dx. Now देखो ये फॉर्मूले को मैंने कैसे इस्तेमाल किया, ये मैंने यहाँ पर इस जो एग्जाम्पल दिया इसके अंदर आपको मैंने बता दिया. अब देखो एग्जाम्पल में मैंने बता दिया ना, तो यहाँ पर एक इसकी और लैंग्वेज टाइप में लिख सकते हैं. तो ये फॉर्मूला तो देखो अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा. इसमें अब देखो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा सर कि अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन ई टू दी पावर इंटू एक्स दिया होता तब हम क्या करते, क्या हम यू इसको लेते और वी इसको लेट करते. नहीं, ये भी एक पर्टिकुलर एक मेथड है, पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उसके हिसाब से आपको लेट करना पड़ेगा कि पहले यू किसको लेट करना है और जो बाद में v आता है उसको कैसे लेट करना है. मतलब कहने का मतलब दिस इज़ फर्स्ट पार्ट u एंड v इज़ द सेकेंड पार्ट. ये चीज़ कैसे लेट करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ.
सो देखो, इस सबसे पहले एक मैं इस फॉर्मूले का स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू functions is equal to first function multiply by integral of second function minus integral of, अब इंटीग्रेशन किसका निकालना हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। सो एक तरह से ये जो फॉर्मूला मैंने लैंग्वेज के रूप में लिखा है, तो देखो इस फॉर्मूले को हम चेक करते हैं वापस इस वाले फॉर्मूले में, that the product of two functions, let's say u and v, is equal to u means the first function multiplied by integration of the second function minus the integration of the differentiation of u into integration of v. So this can be done easily, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि what is formula telling about and how can we solve this equation. So मैंने ये बताया था कि ये जो x और ex जो हम लेट करते हैं पहले u और v, कि u और v किस बेसिस पे लेट करते हैं। सो एक इसका फॉर्मूला है विच इज़ कॉल्ड एज ILATE फॉर्मूला। ILATE फॉर्मूला इन द सेंस दिस इज ILATE. So what is this ILATE? This is I means inverse trigonometry. This inverse trigonometry. Inverse trigonometry आप समझते हो क्या होता है? All the inverse trigonometric function like sin x, cos inverse x, tan inverse x, etc. So you got all the values like a trigonometric function which is sin x. मैं सारे लिखता, चलो एक लिख के आपको समझ में आ जाएगा. Second is L. L is what? The logarithm function. Okay, and then it is A. What is the A? A stands for algebraic function. Algebraic functions. Then T. T means trigonometric functions. Okay, and the last is E, which stands for exponential function. So देखो ये फॉर्मूला क्या है. What is this ILATE means? It means अगर हमारे पास जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर e टू दी पावर x इंटू एक्स दो फंक्शन तो पहले लेट कर दी, यस, देन इट इज़ डन बाय ILATE फॉर्मूला. सो या यहाँ पर हम इंटीग्रल्स बाई पार्ट करते हैं, इसको ILATE फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है ना. सो ILATE फॉर्मूले के हिसाब से अब यहाँ पर देखें तो ex और x दो फंक्शन आ गए, बट यहाँ पर पहले क्या आएगा ILATE के हिसाब से. तो ILATE के हिसाब से यहाँ पर e तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज, एंड x इज एल्जेब्रिक. तो एल्जेब्रिक हमारे पास पहले आ रहा है, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके ऐसे लिखना पड़ेगा. तो इसका मतलब पहला फंक्शन हमको u मानना पड़ेगा, सेकंड फंक्शन हमको v मानना पड़ेगा. ये कैसे किया? ILATE का यूज़ करके. सेम टू सेम अगर sin x इंटू ई टू दी पावर x दिया हुआ या sin x इंटू एक्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे, चेक करेंगे. तो ILATE में t किधर है, यहाँ पर t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इससे ऊपर है a. तो पहले कौन सा आ रहा है? a मीन्स एल्जेब्रिक विच इज x. सो वी कैन राइट इट एज x इंटू साइन एक्स. सो u ये करेंगे लेट और v ये लेट करेंगे. सो जैसे u v लेट करना है, आप समझ गए कि दिस इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो फर्स्ट टू लास्ट. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस ILATE इज refers to फ्रॉम स्टार्टिंग फर्स्ट. मीन्स अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दी हुई है, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स से साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स, सो यू नीड टू पुट फर्स्ट दिस एज वैल्यू ऑफ u. मीन्स अगर क्वेश्चन में हमारे पास लेट्स से दिस इज x इंटू साइन इन्वर्स एक्स है,
तो हमको इस इक्वेशन को ऐसे लिखना पड़ेगा इंटू एक्स डॉट एक्स, मतलब इसको हमको यूलेट करना पड़ेगा, इसको वीलेट करना पड़ेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ये जो किया ना, ये यू वीलेट किया, तो ये फॉर्मूला तो हमको समझ में आ गया, बट अब जब जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है ना तो आप क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि आपको पहले क्या इस्तेमाल करना है। बिकॉज अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्यों है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। जैसे फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले में बताया था मैंने, जो फर्स्ट हमारे पास फंक्शन है दैट इज़ यू, इसको जब पहले हम सॉल्व करते हैं तो इसके बाद में सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन जब बाद में इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं यू का, तो डेफिनेटली जो पहला फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और वो डिफरेंशिएबल ऐसा हो ताकि हम बाद में कटिंग कर सकें। तो देखो अगर यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर डिफरेंशिएबल है बट फर्स्ट है जाओगे आप, तो यहाँ पर तो फॉर्मूला यूज़ करना, यहाँ पर साइन एक्स डिफरेंशिएबल है बट साइन एक्स बार बार क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, फिर वापस करते रहोगे तो कॉस एक्स का साइन हो जाएगा, तो वो चीज़ लंबी चलती जाएगी, सॉल्यूशन एक आपके पास आएगा नहीं। तो सॉल्यूशन आने के लिए क्या मैंने एक्स लेट कर दिया, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 डेफिनेटली एलिमिनेट हो गया, मतलब 1 हो गया ना, एक्स का तो एलिमिनेट हो गया, तो बाद में जो फंक्शन आएगा साइन थीटा कॉस थीटा में आएगा, और कॉस थीटा साइन थीटा का आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है, यही चीज़ हमको करनी सीखनी है। अब जैसे फॉर्मूला करेंगे ना सॉल्यूशन तो हमको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते फिर, ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सो देखो पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा हुआ है, दैट एक्स डॉट साइन 3x डॉट डी एक्स। अब देखो यहाँ पर आईलेट फॉर्मूला लगाएंगे, तो आईलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किधर है, यहाँ पर बताया था द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज आफ्टर द एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ये जो अरेंजमेंट इसका परफेक्ट है, मतलब इसको अपन यू लिख देंगे और इसको वी लेट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। वी नो दैट u is x and v is sin 3x. So using integral by parts or ILATE, so we have this is u dot v is equal to u integral v dot dx integration of differentiation of u into integration of v dot dx, और ये पूरा क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन। देखो ये जो लिख रहा हूँ ना, ये बस आपके लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम अगर आप लिखोगे तो बेटर ही आएगा, नंबर अच्छे मिल जाएंगे, अपना फॉर्मूले का रेफरेंस दे रहे हो। सो दिस विल गिव्स अस पुटिंग अबाउ इक्वेशन विच इज़ लाइक x into sin 3x dot dx, this is equal to u means x, here sin 3x dot dx minus integration differentiation of x into integration of sin 3x dot dx and whole bracket dot dx. Okay, so solving this we have x into cos 3x, and this is upon 3, and this will be minus because the integration of sin 3x would be minus times of cos 3x by 3. Okay, minus integral, so differentiation of x would be 1. Okay, the integration of sin 3x will be again cos 3x upon 3, and minus minus will be cancelled as 1 plus 1. So dot dx, so this can be written as x by 3 cos 3x plus 1 by 3 cos 3x dot dx. So this will give us minus x by cos 3 plus 1 upon 3, and integration of cos 3x will be sin 3x upon 3 plus c. So this will conclude as x by 3 into cos 3 and plus 1 upon 9 into sin 3x plus c. So this is the answer of this question. So we have done easily solving this equation using the ILATE formula. So yes, we have done this question. Now second question will start. Now what is the question given is integration of x into t log x. So if we go to the ILATE formula, or just clicking that ILATE, okay, maybe yes, ILATE, this is correct. So recalling this formula, what we have, x is like a algebraic function and log x will be logarithm.
So logarithm will be at the first instance. So we can change it as log x into x dot dx, where u would be log x and v would be x. Okay. Now using integral by parts, which is integral u dot v is equal to u integral v dot dx minus integration of differentiation of u with respect to dx into integral of v dot dx bracket this is dx. So we have integration of log x into x dot dx can be written as let's say this is log x into integration of x dot dx minus differentiation of log x integration multiplied by integration of x dot dx whole bracket dx. Okay, now solving this, we have log x integration of x would be x square upon 2 minus integration of log x differentiation will be 1 upon x, and integration of x will be x square into upon 2 dot dx. Okay, this is equal to x square upon 2 log x minus this x will cancel by this, and we will have 1 upon 2 x dot dx. So the resultant formula will be x square upon 2 log x minus this is 1 upon 2 and this is x upon 2 plus c, because the integration of x would be x square upon 2. So here it is x upon 2 into log x minus 1 upon 4 x square plus c. So this is the correct answer of this equation, this question. Using ILATE we can easily find the answer. So switching towards the next question. So now what is the next question asking us? So let me write ILATE. Okay, so what we are now founding, we know that differentiation of log x would be 1 upon x. So everybody has the question about that, what is the integration of log x, because we know that integration 1 upon x would be log x, but what is the integration of log x? So we are doing here, so we will consider some method like 1 dot log dot dx. So what is this? This 1 is, we can call it as algebraic function. So here using an ILATE formula, algebraic function is here and the logarithm which is before the algebraic function. So we can write as log x dot 1 dot dx. Can we write it as simple? So using integrals by parts. So I beg my pardon, my writing would not be that good. You just need to understand what I'm saying. So using integral parts, integral by parts formula, integration of u dot v dot dx would be equal to u integral of v minus integral combine differentiation with respect to x of u multiplied by integral of v dot dx bracket dot dx. So we will find integral of log x into 1 dot dx gives us log x integration 1 dot dx minus integration of whole differentiation of log x into integration of 1 dot dx bracket dx. So the resultant will be, this is log x multiplied by log this is x, which means the integration of 1 is x minus integral differentiation of log x will be 1 upon x and integration will be x, okay, dot dx. So this will give us log x minus 1 dot dx. Why? Because this x will cancel by this, so we're left with x dot log x minus x plus c. So this is the answer of the integration of log x particular. So we will easily find any type of question which will given the examination. So we are done with next question. So switching to our next question. Okay, this is incomplete, this is yes, this is the type of question. Again we can use ILATE formula.
So using ILATE formula, we can change this question as log square dot 1 dot dx. I already told it because log came before the algebraic function. We are accepting, we are letting that 1 would be an algebraic function in which x is the value, in which the value of x is 1. So using integral by part, integration of u dot v dot dx would be equal to u dot integral of this bracket differentiation with respect to x of du multiplied by integral of v dot dx. So I have to write every time to learn formula correctly. This is log x whole square dot 1 dot dx. So this will gives us log x whole square integral of 1 dot dx minus integrals of combined bracket differentiation of log x whole square multiply integral of 1 dot dx. So the resultant answer is the x log x whole square minus integral. This would be treated as x square, like I'm just letting it. So for doing x square differentiation, we have 2 into x to the power 2 minus 1, which is 1. So we will have this again 2 times of log x. The differentiation of the log x would be 1 upon x multiplied by integration of 1 dot dx will be x dot dx. So we'll have x into log x square minus this x will be cancelled by this, and we will have 2 times of log x dot dx. Now what is the value of this integral log x? We have already find it in previous question. Yes, this is x log x minus x. This is x log x minus x. Okay, this is correct. Plus c. So I'm just making this sense that every time, every type of question has a solution, no matter what is question. Okay, it is then 2 times of x. Okay, plus times of 2 times of x plus c. So this is the correct answer of this question, which log x square. Now what I'm telling, we can use our mind using simply without using this ILATE formula. How we can use this? So we have done some questions. Let me see, I have another question. Okay, 2 more question I have. So first of all, let's do the 2 questions. Okay, this is e to the power x. So this is the question given to us. So what can be the answer of this question? You need to understand clearly. So listen carefully, this is very important question and this has several formulas. So using ILATE formula, we have the exponential is here and the trigonometric function is here. So it can be written as integral of sine 2x dot ex dot dx. So let's say this is equal to I. Why I'm doing this letting, that is on purpose, you will get on the upcoming steps. So using integral by parts formula, we have integral of u dot v dot dx will be equal to u into integral of v minus integral of differentiation of u multiplied by integral of v bracket dot dx. So we have, this is integral sine 2x dot ex dot dx. So putting the values, we have like sine 2x integration of e dot dx minus integration wholly differentiation of sine 2x and integration of ex dot dx dot dx. Okay, so we have e to the power x into sine 2x minus the differentiation of sine 2x will be cos 2x, and 2 is in front of this, multiplied by ex
dot dx. So this is equal to e to the power x into sine 2x minus 2 times of cos 2x dot e to the power x dot dx. Now we are just trapped by this again question, which is cos 2x dot dx. So we have to do another time for more time using the integral by parts. So we will let I1 is equal to integral cos 2x dot ex dot dx. Now here it is u and it is v. So using integral by parts, I'm not writing the formula here. So we have this is cos 2x integration of ex minus whole differentiation of cos 2x into integral of e to the power x dot dx dot dx. So what we have, I'm writing it at next slide. So this is equal to e to the power x cos 2x minus integration. So what is the differentiation of cos 2x will be minus times of sine 2x, and 2 will multiply in 2 times of sine 2x, minus will be cancelled as plus 1. Okay, and the integration of ex will be ex dot dx. So this is equal to e to the power x cos 2x plus 2 times of integral sine 2x dot dx dot e to the power x dot dx. So this is equation number, I think I have to give the equation. Let's say this is equation number 1. This above equation is 2, and now this is equation is 3. So let's compare. Now comparing equation 3, 1 and 2. Why I'm comparing? That you can see we have the function, we have the integral, which is integration of sine 2x dot ex is the value of I. So can we write this as e to the power cos 2x plus 2 times of I? Yes, we can write it as, simply we can write this. So putting this value, so this is equation number 4. So putting the value of I1 in equation 2. So you already know the equation 4 is the value of I1, I guess. So in equation second, what is the equation second? This is equation second, which is I is equal to e to the power x into sine 2x minus times of 2 into integration of cos 2x, which is also called as I1. We have let it 2 times of I1. So this I would be equal to e to the power x sine 2x minus 2 times of value of I1 will be e to the power 2x e to the power x into cos 2x plus 2 times of I. Okay, so I would be equal to e to the power x into sine 2x minus 2 to the power ex cos 2x minus 4i. So this I will be given to goes to the left hand side. So we have 5 times of I is equal to e to the power x into sine 2x minus 2 times of e to the power x cos 2x. So here the value of I would be equal to 1 upon 5, and let's say common ex, we have sine 2x minus 2 times of cos 2x. So we are with the formula. So yes, we have done this. So this is the answer of this equation. So this is the simple formula. Now next question will be, so what we have to find, just using ILATE. Here x is algebraic function, e is the exponential, this is exponential. So yes, they are arranged correctly. So here x dot dx, now using integral by parts. So we have this is x dot e to the power x dot dx is equal to, is minus integral combined differentiation of x. So I have already done, I think so. I think yes, I've done it.
नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमने जो इतने सारे क्वेश्चंस किए थे ना, इसके अंदर इम्पोर्टेंस इस चीज़ की है कि मैंने बताया था आपको कि जो हम आइलेट फॉर्मूला लगाते हैं, हमको आइलेट फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तुमको ध्यान पड़ जाएगा कि इसकी कहाँ पर ज़रूरत है। जैसे पर्टिकुलर ये क्वेश्चन लेते हैं तो खुद ही देखो, अगर मैं साइन 3x को मैं अगर इंटीग्रेशन कर लेता, बाई चांस इंटीग्रेशन कर लेता, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जैसे मतलब u अगर मैं पहले मान लेता, अगर मैं साइन 3x को u मान लेता, तो साइन 3x को u मानने का मतलब क्या होता है, हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम x का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 2 बार। अब x का आप खुद देखिए कि x का मैं 2 बार इंटीग्रेशन कर दूंगा, अगर बाई चांस चलो कर देते हैं, तो हमारे पास दोनों बार x² बाई 2 आ जाएगा। तो क्या वो इक्वेशन लंबी हो जाएगी? डेफिनेटली। x को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, हमको क्या x को एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन ही करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन के लिए हमको u की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आइलेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ लगाया हमने आइलेट, तो यहाँ पर कॉमन सेंस है कि अगर log x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे इसको u मानना पड़ेगा, और अगर मैं इसको v मानूंगा तो यहाँ पर x² हो जाएगा, तो ये log x का क्या 1/x हो जाएगा, x² से कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ ही जाएगा। ये चीज़ तो आपको सोचनी है। अब जैसे log x लिखा हुआ है यहाँ पर ओनली, तो ये तो सिंपल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कॉमन सेंस है। log x को मुझे u मानना पड़ेगा बिकॉज डिफरेंशिएशन log x का ही कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन log x का कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वी कैन नॉट पुट इट। अगर यहाँ मैंने वी लिखी हुई, जैसे चलो वापस भी चलते हैं, अगर मैं यहाँ वी रखता है लॉग को, लेट्स से वी को लॉग को मैंने वी रख दिया, तो या फिर इंटीग्रेशन लॉग एक्स आता, एक्स ये क्या आता, लॉग आता, तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी हमको लॉग को तो वी रखना ही पड़ेगा। लॉग आ गया तो मतलब वी ही रखना है, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट जैसे लॉग स्क्वायर एक्स, वो सेम चीज़ है। अब यहाँ पर ना, तो देखो यहाँ पर तो क्या है, हमको सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पर आइलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉमन सेंस है, ई एक्स का इंटीग्रेशन हम करेंगे ना तो ई एक्स ही आएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना लंबा चला जाएगा, इसलिए हमने ई एक्स को लेट मान दिया, ठीक है ना। सो ठीक है, अब हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि बाई पार्ट्स का एक तरह से खुद से आपको समझ में आ गया होगा कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ क्लियर करवाई मैंने आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कहना क्या चाहता है, हमको उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, किस टाइप के वेरियस क्वेश्चन आते हैं, हमको आइलेट फॉर्मूला कैसे यूज़ करना होता है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो ये सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पर कर दिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बिल्कुल, अगर आपको अच्छा लग रहा कंटेंट तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और कंटेंट तो देखो ठीक ही है, बाकी सपोर्ट करो तो बढ़िया है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।